10 years of my life wasted in Tumbad, like my youth, my energy, exhausted. 5 years I spent on making something which I'm the most proud of called Gulkanda Tales. I cannot share a single image, not a single photo or footage for all the horrible wrong reasons which I don't want to create controversy, so I will not speak about them, but it can easily get killed. Tumbad 10 साल तक कोई छूने को तैयार नहीं था, and suddenly everybody wants me to make Tumbad. I said it was a trilogy. ऑलवेज अ ट्रायोलॉजी. पहाड़, पंगीरा, पक्षी तीर्थ, देविल कप. यहाँ नाम पैसे कमाने के लिए होता है और भी कई सारे फ्रेंड्स. आई एम हियर टू मेक द फ्रेंड्स व्हिच आई लाइक. आज के सिस्टम में दे आर ऑल बेस्ट, यू नो, बेस्ड ऑन पेड पीआर. एवरीथिंग इज वर्किंग अगेंस्ट माय सेल्फ. आई एम ऑन अ वेरी गुड टर्म्स विद सोहम. मेरे लिए जरूरी बात ये थी, इवन दो वी पार्टेड वेज, कोई कड़वाहट नहीं है. Could you tell us where Rakta Brahman's at, or are you not? Just to fill me, just to fill me. Arriving without promotions a week after Border 2. Are you being suicidal? This is a post that I saw on the internet and I laughed. And at the end of it, when the filmmaker himself asks his film, where did you get this courage from? Or what have we become and how did you get so big? I almost felt like Rahi was talking to his child. And in response, he said, Maya Sabha winks. So I'm going to start off with that, Rahi. What a beautiful post you put out, because I feel like आपको खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये फिल्म जो है, हम यहाँ बैठे हैं, प्रमोशंस हो रहे हैं, 30 तारीख को फिल्म थिएटर्स में आ रही है. So how are you feeling now versus the day that you put that post? दिस परमेश्वर खन्ना ना, इसने मुझे कई सालों तक मुझे बहुत तकलीफें दी है. दिस वाज इन एवरीवेयर द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जो बहुत डिफिकल्ट थी, जी हाँ. जो बहुत इंसेन थी. समथिंग लाइक दिस can't exist practically, if you ask me, under studio systems, under proper Bollywood concepts. So after Tumbad, before I was doing Tumbad, I was pitching for Gulkanda Tales. That was the time it was called Ashwalinga, Rakta Brahmand, and there was a very small personal project which I had called Maisabha. The whole story was about this four characters. There is a fifth character, if you ask me. The character is a theater itself, Sure. the interior of theater, and one night story about, it starts with the gold hunt. Yeah. And it goes somewhere else, especially after interval. तो जब मैं स्क्रिप्ट सुनाता था, people used to be like, usually when it started, the first names they used to appear. That time everybody was interested in the Manish Maisabha initially systems, because it was easy to make. Yes. That they could see, like Gulkanda, which required like thousands of sets, world. तो मुझे सब पूछते थे कि भैया ये आप अगर बनाना चाहते हो तो प्लीज सेकंड हाफ जो है आपका, वो आप बहुत ज्यादा व्हाट इज दिस, लाइक द सेम क्वेश्चंस व्हिच पीपल यूज्ड टू आस्क मी अबाउट तुंबाड. इज इट अ हॉरर, इज इट अ मिस्ट्री, इज इट अ थ्रिलर, है क्या? विथ ऑल माय प्रोजेक्ट्स आई यूज्ड टू से कि ये यही है जो आपको दिख रहा है. In a way, it's a Shakespearean tragedy. In a way, it's a mystery, but it's about people. It's not about action. It's not about thrills. It's not about ghosts. In the core, it's about this human beings, yes. the human connection. Then I decided that I want to do it against the studio support. हमने 22 लोगों ने हमने इसे बनाया था practically. Wow. When I used to take the name, everybody that time Irfan sir was there. So Gulkanda already we were talking. तो सबको लगता था फॉर परमेश्वर खन्ना द राइट कैरेक्टर हु यू हैव इन माइंड, बिकॉज इफ यू हैव ओनली 4 कैरेक्टर्स दे शुड बी लाइक इंस्टेंटली नाम आते थे, यू नो, माधुरी दीक्षित और इरफान खान एंड फॉर दीपक. एंड आई वाज क्वाइट क्लियर अबाउट माय कास्ट, स्पेशली फॉर परमेश्वर खन्ना. एंड जब मैं कहता था कि यू नो आई हैव जावेद जाफरी इन माय माइंड, सडनली ना ऑलरेडी अनकंफर्टेबल रहता था सब कुछ, और एक लंबा सन्नाटा, और कोई कुछ नहीं कहता था, सिर्फ चुपचाप मुझे देखते थे. They used to just look, the entire marketing team, the creative team, all the teams, they're just looking at me. But I knew, and now I'm 100% sure that any other actor as a Parmeshwar Khanna instead of Javed Jafri. Because see, the character of Parmeshwar, this unlike Tumbad or Gulkanda Tales or rest of my projects, it's not a story driven. Yes. It's a character Character driven, yes.
It's a character which takes it forward to the final revelation. If the character fails, if it can't hook you, everything fails. And I realized to play this bizarre character is neither a hero, neither a villain. Like he And he's keeps changing. unreliable. It's completely unreliable, Correct. Correct. unpredictable, and it keeps the moment. Slowly, the film moves forward. It's like a slow poison, and one by one, you start seeing the layers. I needed someone who's not just a brilliant actor, but at the same time, audience should not shocked by what Parmeshwar Khanna is doing. They should be shocked by the actor who's playing Parmeshwar Khanna, because any actor who's going to play Parmeshwar Khanna, he was going to be around 50 plus. Yeah. And in our scenario, there are very few actors who are brilliant actors, but चाहे परेश जी हो, चाहे के हो, hundreds of them brilliant, लेकिन surprise factor. There is only one actor जिसका acting talent 5 या 6% भी use नहीं हुआ, even though he's there for 40 years. He's categorized. He's categorized as a dancer, as a comedian. He's one of the most finest actors, and no one even tried. So the surprise element which was required, especially in last 40 minutes, मुझे पता था. तो एक बहुत बड़ा gamble था. मैंने gamble खेला. This is again like this is my personal, unique, small experiment. It is a beast in its own rights. मुझे पता था कि Gulkanda was supposed to come out. Gulkanda was ready in 2023. I'm still waiting for it to come out. It's a risk in every way. Even you know the PR promotions. हम 22 लोगों ने फिल्म बनाई थी. We faced a lot of problems. But I'm here to make films. Yes. मेरा नाम पैसे कमाने के लिए होता और भी कई सारे films. I'm here to make the films which I like. It's not about how the trends are moving. What is right now sellable. The paid PR. बहुत सारी चीजें आपको लगती है. This film surprised me. मैंने पिछले 4 साल 5 साल when I was working with other projects, I was slowly working on it because it didn't have the backing, the fundings. Yes. In every way, this film is a risk, and I myself am surprised. मैं बहुत ये- खुश हूँ लेकिन कि आप सरप्राइज्ड हैं, लेकिन एटलीस्ट वी हैप्पी बिकॉज आई फील राइट आपके राह पर हमेशा it's been so tough for you, but you truly are a hope beacon for filmmakers of today. जो बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, जिनको कैमरा पहली बार उठाना है, वो आपकी स्टोरीज देखते हैं, आपकी फिल्में देखते हैं, और वो कहते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कर दिया, एंड इट्स ऑल्सो योर विजन ट्रम्प्स एवरीथिंग. You know, ultimately it's not about scale, it's about vision. और scale और vision में दो बहुत बड़ी चीज़ों का फर्क होता है. स्केल आप किसी भी चीज़ में ला सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन अगर विजन ना हो तो स्केल जस्ट फील्स एम्प्टी. एंड आई फील कि आजकल के दौर में what is the triumph already is that this is a theatrical release, and I feel like that is hats off to you. How do you do? See, it comes with a price. Like you told me about a vision. After Tumbat, 5 years I spent on making something which I'm the most proud of, called Gulkanda Tales. Today, it was ready in 2023. I cannot share a single image, not a single photo or footage. This was the world from Anurag Kashyap's time, from 2007. We are trying to build this. Finally, I built it. It's a 4,000-year-old bizarre world. The characters, the story, it was insanity. Originally, it was for I wanted Kamala Hassan sir to do it in 2 parts. So that's what I converted into OTT. So for me, it was a massive shock. Like I'm still hoping that it gets released this year. I can't even Actually, give you the yeah, details. I'm just gonna say I hope it comes out, and let's pray because there is goodness. So when you say the there. vision, like imagine like I have a more than 100 crore project ready, and for all the horrible wrong reasons which I don't want to create controversy, so I will not speak about them, but it can easily get killed. So जब आप ऐसे सिस्टम में और ऐसी सिचुएशन में आप डील कर रहे हो, एक हद आती है where you start doubting yourself. I said don't doubt yourself. Everyone said कि अभी मैं सब right now, whatever you are doing, all my friends, well wishers की, मैंने कहा ये जो बच्चा है ना इसको जीना था. मैंने तो बहुत पहले मुझे नहीं लगा था क्योंकि literally like there was it went through a lot of help. It had no support. इसको जीना था, ये यहाँ तक अपने दम पे पहुंचा है. I'm a creator in the end. मेरा काम है कि after एक certain age you have to let it go. After the age 18, ये अभी 18 साल का हो अरे गया. हो गया है. So now इसका थिएटर तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये it was supposed to be like straight away go to OTT type. मुझे पता था this was I don't make my films for OTT when I make films.
Rakta Brahman was for OTT, Gulkanda is for OTT, not this, not Pahad Pangira. So this particular experiment is reaching there and without absolute zero PR. Like मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरी एक तो मैंने बना के रखा था बहुत पहले when it was called Maisaba. अभी anybody tries to like even type it कि Maisaba है कहाँ, first thing they get is algorithms. Now all the YouTube algorithms, Insta algorithms, Twitter algorithms, आज के system में they are all best, you know, based on paid PR, everything is working against Maisaba. It doesn't even have a platform, so the trailer is scattered. It's scattered on small different Yeah, who are छोटे these छोटे guys? platforms. Movie one? Are they? What is So the lot of like there is a Zircon, there is a Taran Adarsh, then there Yes. is me. So there is not even मेरे लिए सबसे हैरत की बात है इसके बावजूद इसका स्प्रेड हो पाना और ये जो भी स्प्रेड हो रहा है थोड़ा सा भी हो रहा है इस तरह ऑर्गेनिक है. बिल्कुल हो गया. The kind of people who are talking about it उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा, उनके नाम भी हमें पता नहीं ना हमारे नाम उनको पता है. वो जो चीज होती है वो सबसे बड़ी होती है. Like in today's date without a zero paid promotions. So I am curious. I would like to know ये पागल क्या करते हैं. और ये कहाँ पहुंचता है. But you know, if you look at the poster behind me, guys, you will see, you know it's Rahi's world because his obsession with characters who are obsessed with greed and gold. मुझे ये जानना है कि ये आपकी कटाक्ष है, आपका कटाक्ष है, okay, against human nature and greed, but greed and gold are so integral to Tumbad and to this. So talk to us about where that comes from. It's actually a coincidence which has backfired on me. कहाँ? As I told you that Gulkanda Tales or Rakta Brahmand Yes. or Pahad Pangira are Bilkul. entirely different Bilkul. subjects. Surprisingly, this was a subject which again was based on a father-son relationship. And somewhere the gold and greed, which is the starting triggering point for the mystery, which goes on. और instantly because बीच में कुछ नहीं है and suddenly अभी ये आ रहा है, तो ये ऐसे current लग जो रहा है, है, हाँ. yeah, it seems कि okay it's a repetition, it's not. Maisaba is entirely different. Yeah. It is तुम्बाड़ में मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे, दुनिया थी, बिल्कुल. यहाँ सब कुछ मैंने सिकोड़ रखा था. मैंने कहा था कि आई वांट टू गो विथ मिनिमलाइजेशन. नथिंग, देयर इज नो फिफ्थ कैरेक्टर other than the theater. There is nothing but the conversations, the way it's taking it forward. There are no gimmicks. There is no ridiculous action. There are no typical cliche plots or twisted ending which will spoon feed you. The whole core of the film is last 30 minutes. That's when you realize, oh, I can't give you any spoilers. Don't give me any spoilers. I am your fan. I will go to the theater to watch it. So please मुझे मत बताइए. But it's a 99-minute film, right? How amazing. Does it have the interval as typical films do? Okay, so that's all in place. So just a regular film experience for me. I do want to ask you though that because of the gold, because of the greed, thematically sure, you feel like you know the filmmaker. कि क्या राय अनिल बर्वे है, गोल्ड है, सोना छुपा है. You know, I want to watch what he's doing next in this exploration. But at the same time, I know that it must have been very tough for you to actually move away from an IP like Tumbad. What does that do to a filmmaker or a visionary? It will destroy you if you try to. क्या हुआ था ना कि तुम्बाड़ 10 साल तक कोई छूने को तैयार नहीं था and suddenly everybody wants me to make तुम्बाड़ 2 or something like तुम्बाड़. I said it was a trilogy, always a trilogy. पहाड़ पंगिरा पक्षी तीर्थ they will come. लेकिन क्या होता है ना, ये आप बहुत बड़ी रिस्क लेते हो, जैसे तुम्बाड़ रिस्क थी, ये भी रिस्क है. दिस वाज अ पर्सनल एक्सपेरिमेंट. अगर इसकी कोई प्राइस है तो मैं चुकाने को तैयार हूँ. ये एक्सपेरिमेंट ये थी कि ये बहुत डिफिकल्ट है इसे बनाना बिकॉज आई हैड टू क्रिएट अ एंटायर वर्ल्ड इन अ वेरी claustrophobic place. When I talk about a theater, I'm not just talking about one particular. There are different areas. There is a projection room. There is a place for where the Rolls Royce is standing. There is a place for cafeteria. अलग अलग उसकी दुनिया है. The place of Vasu's room, परमेश्वर's room, the entire hall. इस सबको क्रिएट करना एंड सब में कहीं ना कहीं इस भूत का, इस परमेश्वर खन्ना का रूप धारण कर लिया है in past 20 years. It's a massive challenge. Those 4 characters, even one performance fails, even 30 seconds or 1 minute of scene fails. In edit, you don't have anything else. You don't have lot of different layers to उसको. तो अगर कुछ भी थोड़ा सा गिर जाता है, आपका अगला जो पूरा स्ट्रक्चर है वो गिर जाता है. लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो है मैसबा जैसे इसलिए जरूरी है कि एज अ फिल्म मेकर मेरे लिए जरूरी बात है कि आई वांट टू ग्रो. आई वांट टू, मुझे सीखना है. मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ. जब कुछ नहीं है आपके पास बस एक कंजस्टेड कॉस्ट्रोफोबिक प्लेस है. आपके पास 4 लोग हैं
और आपके पास ये ऐसी कहानी है जो it starts in a very usual note. It starts with a proper, the way it should start, the way you see in trailer. The last 40 minutes of it, the toughest part. वहां तक उसको लेके जाना और उसको सक्सीड करना. अगर मैं ये कर सकता, मैं कुछ भी कर सकता. तो मुझे सीखना था, मुझे समझना था. आप जब सिंप्लिसिटी इज द लास्ट फॉर्म ऑफ आर्ट. Yes. सबसे ज्यादा कंजस्टेड प्लेस में आपके पास हजारों रंग है, आपके पास हजारों ब्रश है, कैनवासेस है, सब कुछ है आपके पास. वर्सेस आपके पास बस 3 रंग है, एक पेंसिल है और एक छोटा सा पेपर है. बिना रबर के आप क्या कर सकते हैं? तो इससे मैं सीखा. how to deal, and you also dealt with, मैं कहूँगी कि लोग हमेशा बहुत भाव देते हैं या बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं पर्सनल लॉस को, ऑफ कोर्स, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ा लॉस नहीं हो सकता that you lose rights to your own creation, and that is something that I feel like needs to be talked about. Did you this is There are a this is the lot of result? things, but I'll tell you what, like I prefer not to, क्योंकि जो हमने पाथ चूज किए, जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हमें आगे जाना है, like in past 10 years you will never see me in 20 years of my struggle actually that I ever badmouth anyone because it's not required. If I have problem with people, they definitely have problems with me. मैं भी कोई, हर एक के इश्यूज होते हैं. आई एम ऑन अ वेरी गुड टर्म्स विद सोहम. मेरे लिए जरूरी बात यह थी, इवन दो वी पार्टेड वेज, कोई कड़वाहट नहीं है. ही डिड व्हाट वाज राइट, आई डिड व्हाट इज राइट. सो इवन आई एम ऑन अ वेरी गुड रैपो विद पंकज. फिर अलग लोग आए, फिर राज डीके आए, नाउ देयर इज विद आई कांट. सो ये लोग मिलते रहेंगे. मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि क्या होता है ना कि हर एक फिल्म का जो प्रोसेस होता है बनने का, ये एक्चुअली बहुत टफ होता है. आपने सिर्फ हाथी के दांत देखते हो आप पीआर में दुनिया के सामने. एक्चुअली व्हेन वी मेक इट तब असली दांत दिखाई देते हैं और सबके सबके पैर मिट्टी के दिखाई देते हैं. बट दैट्स अ फाइट, दैट्स द प्रोसेस, यू हैव टू टेक इट ग्रेसफुली. तो पीआर लूज करने की अगर बात करते हैं, अगर वो लूज नहीं होता तो तुम्बाड़ बनता ही नहीं. तो कोई नहीं, कुछ नहीं बनता. ना गुलकंदा बनता, ना रत्तुरम्बाड़ बनता. लाइक you either born with a silver spoon in your mouth Yes. or you have such a huge name and such a huge successful films behind you कि आप वो गणित कर पाओ कि भैया ये मेरे पास रहेगा. हाँ, और ये मैं वो जब absorb बात कर आएगी पाऊँ. तब आएगी. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. And you told us about Gulkanda, that sure, I hope it sees the light of day. Could you tell us where Rakta Brahman's at, or are you not sure With yourself? Rattarumman, I prefer to keep complete quiet here because I Sure. think Sure, I'll respect that. And Pahad Pangina, because these are all exciting projects as your fans. Pahad Pangira is like after Gulkanda Taste, that was the वो दूसरा माउंटेन था जो मैं उठा रहा हूँ. Pahad Pangira is the world which I was building, the trilogy which I was creating is a second of it. Tumbad dealt with the Father, Son, and Holy Ghost. Pahad Pangira, it deals with the dawn of feminism. Yeah. So let's see. I hope एक साल में हम लोग बात कर रहे होंगे, शायद ऐसे ही I बैठे होंगे. hope so too. This is amazing. I also want to talk about how in your trailer you say कि अक्सर लोगों को दिखता नहीं जो उनके सामने है. And I feel like this is you playing a puppeteer and you're playing a game with the audience. I tell you what, this trailer you see, the teaser you see, the film you'll see. If I had any support, a massive PR, अब ये सब जगह फैल रहा होता, पहुंच रहा होता, और the film you are going to watch. लेकिन ऐसे बन ही नहीं पाते फिल्म जो अभी ये बना है. मेरे से बात जो है जैसा है, मैं इसके बारे में एक बात कह सकता हूँ कि ये पहले बना नहीं था ऐसा कुछ और वापस बनेगा नहीं. इवन इफ यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट, इवन इफ यू विल से कि फेयर इनफ, इट्स लाइक हमने कुछ और सोचा था, ये कुछ और निकला है. Correct. The experiment like this, it's very difficult to make in today's date, in any date. All the dialogues, all the scenes, all the craft. मैं बहुत कुछ सीखा हूँ. मैं जितना तुम्बाड़ और गुलकंदा से सीखा हूँ, मैं उतना ही मैसबा से सीखा हूँ. क्या बात? And all of that helps. Yeah, so he's not telling us कि वो आपके आंखों के सामने है. मुझे क्यों लग रहा है कि आप मेरी as an audience you've already challenged me. You're like आओ ना, देखो ना, बताओ ना, try and crack The this code. tricky part with this entire film is after the interval. Till the interval, it's, as I told you, it's a slow poison. It's a setup. Everything which happens after, and the whole reason why the shocks come, especially in the end, towards the end, because constantly आप कुछ और ही देख रहे थे. You are constantly searching for something else as an audience. सच्चाई आपके हमेशा सामने थी. बिल्कुल. And that
suddenly hits you in last 30 minutes, and that's what changes everything about Maisaba. That's the reason why this script was so difficult. क्योंकि it works on many layers. The most shallow layer, अगर आपको कुछ नहीं जानना, you just want to enjoy your 90 minutes of experience. आप हंस के बाहर निकलोगे, you'll be surprised. But if you really want to understand this film, the person who will be able to actually crack the fifth hidden character in this film is the one who understood this film. I can't wait for it. I do want to ask you, today is the first time that I get to chat with you. So I want to ask you, who are the filmmakers who continue to inspire you? In today's date, there are actually few. One of the names is Devashish Makheja. Oh, I saw his Bhosle, then I saw his Joram. I was blown away. और मैं कह रहा था कि यार फिर मेरे स्ट्रगल्स कुछ नहीं इनके सामने. The kind of hell they are going through, and still they are making their films. Like for example, lot of नीरज अभी homebound आया है, but even him मसान से लेके Sacred Game से लेके, क्योंकि क्या होता है ना, right now the system in which we are ना, it has a strong demands. If you want budget, if you want to move forward, it has certain strong demands. And it's आज की तारीख में Sacred Games में नहीं निकला था. I'm 100% sure वो भी जैसे गुलकंदा टेल्स रुक जाती वैसे वो भी उसको भी बन के वो बंद कर देते, वो नहीं आ पाता बाहर. इसके बावजूद आप जब फाइट्स कर रहे हो, and not because you have to say something, because you're a pure artist, you want to create. Every businessman will have 100 of questions कि why Maisaba, but as an artist आपको पता है कि yeah, this was another small experiment I wanted to do. Is because lot of things matter, the money matters, ठीक है, लेकिन आपको अपना काम करना है, आपकी कला आपको आपको बनानी है. आप उसको मार नहीं सकते पूरी तरह, आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन उसकी लिमिट होती है. सो या देयर आर लेकिन पीपल. प्रॉफिट की कहाँ जगह है आपकी स्टोरी टेलिंग में, आपकी कहानी? गुलकंदा में अगर तुम्बाड़ में, अगर मुझे पता है कि तुम्बाड़ में अगर ढंग का प्यार हुआ होता, तो यू नो हाउ इट स्टार्टेड. एक हफ्ता पहले उसकी ट्रेलर निकली थी, थिएटर्स खाली थे. मैंने कभी नहीं सोचा था कि वापस दूसरी जिंदगी में दूसरी बार मैं उस सिचुएशन में आऊंगा. विद Maisaba, surprisingly, मैं I'm in that situation where Oh my like God, practically yeah. without zero PR it's coming out again. But what happens is that's the price you pay when you want to create something so different which is never tried before. The problem with Tumbad, the problem with Gulkanda is the problem with Maisaba, the problem with Pahad Pangira is that the moment you are sitting in a massive studios with their PR teams, with their marketing teams, the first question is that because you can understand their problem also कि they are safe when they know कि ऐसी चार चीजें पहले बनी थी और उनमें से तीन चीजें वर्क की हो, then they take you seriously. When they say something like Tumbad or Maisaba or Pahad Pangira or Gulkanda Tales भी without Raja and DK नहीं हो पाता. When they say something like this has never even tried before, never even imagined before. तो विजन पैशन सब कुछ सही है, लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्क है उनके लिए इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. वेल इनफ, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. वो अपनी जगह सही है, लेकिन आप अपनी जगह सही हो. आपको भी अपने काम करने हैं, अपने हिसाब से करने हैं, क्योंकि आपकी विजन खत्म हो जाए उसके बाद कुछ नहीं होगा. यू ट्राई टू रिपीट योर सक्सेसेस एंड फेलियर्स, कुछ नहीं होगा. बात वो की नहीं है एंड कला. आई वंडर कि जब भी एक आर्टिस्ट आते हैं जैसे कि अनुराग सर, सो व्हेन कश्यप फॉर एग्जांपल गॉट अ बिग स्टूडियो, okay, I remember how much he was criticized for Bombay Velvet, and I feel like it's so weird. I almost hope that you stay independent in spirit, because ये आपकी spirit को compromise कर लेता है कभी कभार. एक you have no lack of people coming to you as a studio. वो studio तो I would never think कि that's the problem. The problem is not कि studio is not coming. Studios are coming, but you are not willing to compromise, and I feel like No, I that's am, but the kind of compromises which I should be happy with. घर जाके शांति से सो जाओ, चलो ठीक है, इतना तो चलता है. Not the kind of which, like there was a time when there were different producers जो चाह रहे कि तुम्बाड़ आज के तारीख में लेके आओ, विनायक को जीन्स पहनाओ, यो हनी किशन के गाने हो. I prefer कि वैनिश हो जाओ गायब होके, लेकिन that ऐसा I मत will करो, not do. ऐसा मत करो. So बहुत easy होता है. और अभी आप बोल रहे because you are seeing it when you haven't seen it, when you are just seeing the script. क्या होता है ना, यहाँ लोग आपके स्क्रिप्ट्स नहीं समझ पाते, आपकी कहानियां नहीं समझ पाते, लेकिन वो एक चीज समझ पाता है, वो आपका कॉन्फिडेंस समझ पाता है. अगर वहाँ उन्हें दिख गया कि आदमी हिला हुआ है, सब कुछ जाता है. मैं सब कुछ खोने को तैयार हूँ, मैं अपना कॉन्फिडेंस खोने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके बाद कैसे है कि आप खुद भी फाइट्स नहीं कर सकते. Yes, सो ऑल रिस्क्स आर फाइन. all risks are fine. लूजिंग दैट, having that self doubt is Yeah. not fine. Having self-doubt is not fine. My show is called Just Too Filmy, and I feel like you are anything but filmy. I like it. Okay. So I want to ask you if there could be something that you could change about the way the Hindi film industry works right now. I wish I could.
You would do what? I wish I could. No, let's wish. Because it's a hall of illusions, right? माया सभा में हम हैं. यहाँ पर कुछ भी possible है. So एक illusion ही सही. What would you like for filmmakers or studios to do better for us? ताकि हम तक ऐसी फिल्में पहुंचे. Risk taking. Anything which is interesting. I understand कि even risk में एक silver line होती है. For example, 10 years of my life wasted in Tumbad, like my youth, my energy, exhausted beyond capacity. It was working. आपको दिख रहा है कि आपके सामने कोई बहुत ही boring, बहुत ही philosophical art film नहीं है. There is a guy who's very raw, very honest. He's creating something which is though unique. It's something which you are intrigued Yeah. while you're listening. Everybody used to get intrigued. जब वो तुम्बाड़ की जब मैं नरेशन देता था, ये एक बात मैंने हमेशा नोटिस की थी. तो तुम्बाड़ ना मैं अब तक बहुत अमीर हो गया होता. मेरे 4 प्रोजेक्ट्स निकल आए होते जो तुम्बाड़ के आधे भी नहीं होते, लेकिन अच्छे खासे व्हाट यू कॉल इट मासिव पीआर होता, बड़े स्टार के नाम्स होते, एक दो ओटीटीज होते. लेकिन हुआ क्या कि गुलकंदा टेल्स 5 years, रक्तरम्मा which I can't even speak anything right now, massive battles, big names attached, studios attached. Something which you see right now as my small experiment, which is now coming out like this. Yes, no, It's but like a still, war in itself, the it's PR. a war in itself, but you know what? It's in theaters. And I feel like that itself is the spirit of an indie filmmaker. पिछले साल I remember lots of indie filmmakers came and signed a petition क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होना चाहिए फिल्मों के लिए. कनू बहल के आगरा पर कहीं ना कहीं he said I didn't even realize that Agra would be the film जिसके ऊपर ये हो जाता. लेकिन चलिए अब हो गया है. We've signed something. As I told you now, ma'am, that now, if you say my most toughest and biggest project, Pahad Pangira, like Pahad Pangira भी शायद 2 साल पहले बन जाता. But I wanted to find right producers कि जो उसको समझ पाए. क्योंकि क्या था कि तुम्बाड़ में बाकी कितने भी प्रॉब्लम्स हो, एक बात हुई कि आई गॉट अ प्रोड्यूसर जो उसको समझ पाए. गुलकंदा टेल्स आई गॉट राज एंड डीके जो उसको समझ पाया. अगर वहाँ गड़बड़ है तो आपको कितने भी पैसे आए, यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स. सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट इफ देयर आर 10 फिल्म मेकर्स लाइक मी, 1 or 2 will survive in a long run. बाकियों को जो फाइट है, no matter, even if I'm a studio or I'm a producer and I'm not Rahi, I cannot help them. Yes. They have to somehow fight their own battles. And here's to you, Rai. Here's to you. There are so many of us who just wait for news about you. We wait for your projects, we wait for your releases. And you must know, if you're fighting a war, you have many foot soldiers. And that's us, your fans. Thank you so much for your time today. I hope you had a good time talking to me. Yes. Thank you.